Thank you, sir. Sumbul Shehzada, could you please mute your mic? Okay, so let's resume with the session. My name is Tabita Jalal. I'm serving here at the International Leadership Training Institute as one of the faculty members and also as a program facilitator. I have been working for women empowerment for past 12 years, and this is my privilege to be facilitating the session today. और आज का सेशन ये बहुत इंटरेस्टिंग है. It is going to be about our personal growth. और जब हम इस सेशन की बात करते हैं पर्सनल ग्रोथ की, आप यकीनन ये सोच रहे होंगे कि हमारा ताल्लुक ह्यूमन रिसोर्स से है और हम तो ये सर्टिफिकेट करने के लिए हम लोग ने अप्लाई किया है. So why this personal growth thing at the very beginning? मैं थोड़ा सा इसके बारे में आपको बताना चाहती हूँ. Before knowing that who is with us, this particular session has been intentionally added as the part of this course. और जब इसको add किया गया है, we try to add into other sessions as well, but it's not that it is added every time. जब हमने इसको particularly इस program में add किया है, तो we know that you are all who have been working with the organizations or you are working with some certain organization currently, and you are the people who are influencers. आप दूसरों के लिए impactful होते हैं और inspiration होते हैं, being HR person or human resource के खास लोग होते हुए. So it is really important to know that why I did this session. ये जॉन सी मैक्सवेल की book, जो जॉन सी मैक्सवेल के बारे में, if you all don't know, but we as the International Leadership Training Institute are directly connected to this John C. Maxwell's team. And as we started here in Pakistan for almost 2 years now, it's more than 2 years. And when we have started it here, तो हम अपने leadership courses में इस किताब को, इस book को बुनियाद बनाते हैं जिस पर आज का ये session होने जा रहा है, and that is known as the 15 invaluable laws of personal growth. और जब हम इसकी बात करते हैं, this one session is based on the first law, and the first law is known as the intentional growth law. So the law of intentionality. और जब हम growth की बात करते हैं, तो unless until कोई intentionally grow नहीं करना चाहता, कोई खुद से बढ़ना नहीं चाहता, तो वो बढ़ नहीं सकता, वो grow नहीं कर सकता है. So this is why at the very beginning, this session has been added to this program, this particular course. So now, as I'm about to start, just give me a few minutes as I have to shift from here. And there is another activity that is going to go on here. Is it okay? They are going to do there? All right. So I'm sorry I did not go on mute, just to make you feel that you are in a session and in a class. So let's get started. I would like to know how many are excited to start and get started off with the course, with the session. Tabitha Shade so much. I know her and I'm excited to see you there. I hope Sambul, Bushra, and all others who have joined us, Muhammad Nabil Siddiqui, Umayma Chaudhry.
and Usman Khan. Yeah. So you all are going to enjoy the session, I believe. And I believe that even if you have not raised up your hands like Tabitha Shad, you too are going to enjoy. Just for a moment, I would like to know about yourself. Would you mind telling me like where you are working currently and also your designation and what are your expectations from the course? It is for myself, even if you were introduced in the previous session, the orientation, but would like to know about you. Go ahead. Umayma Chaudhary, right? Sure, yeah. Thank you so much for inviting us to introduce ourselves. So this is Umaima. I'm working with PwC, Pakistan, as a HR consultant, organization psychologist. I've done my MPhil in organization psychology. Previously, I am a bachelor's in psychology and currently leading the executive department and the OD side of the consulting of HR, of HR consulting side of the firm, right? So perspective, I believe we are so much into kind of little and the theoretical knowledge of HR. So apparently, I've joined this certification so that I can, the new strategies that are evolving in the HR field. Audible? Hello? Yeah, now you are. It was a bit of distortion, but I'm glad to know. So far, I can conclude it by knowing that you expect to learn and explore more about the evolvement of human resource. So yeah, that's a great expectation. Thank you. Thank you. Yeah, Umaima, she unmuted. Assalamualaikum. Walaikum assalam. My name is Mohammed Nabeen. Thank you for inviting to introduce ourselves. Currently, I am working with Imtiaz as manager capacity and benefits. My title is actually does not tell my actual role. I am leading a pan-Pakistan human resource operational benefits and transformation team who is actually working to transform the processes of HR from normal system to SAP implementation. And with that, I'm having around 13 years of human resource experience, both Pakistan and abroad. And taking the purpose of taking this course is just to be updating myself into the conceptual development and the policy making, how things are going in standard way internationally. So this certification, and I believe learning is a continuous journey. So I'm just being a part of that. So I am learning and I am able to transform it to development in any way is something which I will be seeing a success of myself. This is a small introduction of myself. Thank you for the great introduction, and we are hoping to learn from you as well, from your national and international experience. And when we are on the run during this program. So thank you. Yeah, welcome on the board. Who's next? We have so many people. Please take your turn and unmute Tabitha. Hello, everyone. Assalamu alaikum. I am Tabitha Shad, and currently I'm working as HR manager with Essence Skies. And I'm an HR enthusiast, and I'm passionate to grow and excel in the field of HR. And I want to learn modern tools and techniques. Especially, I want to know about labor law, and the performance management, compensation and benefits. So the entire course is going to help a lot. So that's all about me. And I'm so excited to learn with all of you.
Thank you so much, Tabitha. Welcome on the board, and we look forward to have great experience with you. We are excited to know that you too are excited to be here with us and learn a lot. So yeah, labor law is on the way for you. Yeah. Next, could you please do it quickly so that I can resume the session? Hello, Yes. my name is Suma Shehzada, and thanks for the opportunity, for this great opportunity and learning. I have worked in HR field since 11 years as a HR manager in a public organization. So my experience totally is regarding public policies and everything. And this taking this course is like learning things and new trends in HR. So that's why I have opted for this course. Mhm. That's about me. And my masters are in project management and MBA HR, and plus BIT honors, information technology. We are glad to have you here on the board. And Thank I you. believe, yeah, together we are going to learn with you as Thank you have the degrees in the, same field. And we believe that you already have great experience to impart with us. Thank you so much. Thank you, ma'am. Yeah. Who's next with us? Bushra Parveen. Hello, Yeah. hello, ma'am. Assalamu alaikum to everyone. My name is Bushra Parveen, and currently I am working as HR manager in Beacon House Group. And I am passionate to grow in HR field, and I hope it will be helpful for me. And uh, that's all. Thank you. Yeah, you are someone who is already from a great setup, which is expanded nationwide. And we believe that we too are going to learn a lot from you. And yeah, welcome on the board. Who's next? Uh, Rashid Saab, Rashid or Rashid Saab is with us. I saw him. I guess he's disconnected. Okay. And okay, let's get started. Thank you for your lovely introductions. And although it was quite brief and concise, yet huge. And we know that we have not only very talented people, but learned people with us here. So let's get started with the session, which is known as the law of intentionality. So this is going to talk about becoming intentional in learning. बहुत मर्तबा जब हम बात करते हैं इंटेंशनल होने की तो बहुत सारे लोग did someone unmute Misbah Imtiaz, yeah, your mic is unmute. Thank you so much. Yeah, so when we talk about becoming intentional in learning, we get to know that many people say this, but not, they do it practically. It's just, limited to their words, but not, uh, part of their practical. So इस हवाले से जब हम आज यहाँ पर बात करने जा रहे हैं तो वो शुरू करते हैं हम लोग एक पहली चीज से जो पोटेंशियल है और जब हम बात करते हैं यहाँ पर सॉरी जस्ट डोंट माइंड अबाउट द नेम एंड दिस इज द लॉ ऑफ इंटेंशनैलिटी जिसमें आकर हम ये देखते हैं कि नॉट एवरीवन इज इंटेंशनल अबाउट लर्निंग और अगर कोई खुद से ग्रो करना नहीं चाहता तो ये याद रखिएगा ग्रोथ डज नॉट जस्ट हैपन खुद ब खुद ग्रोथ होती नहीं है इसके लिए you have to be intentional, you have to put efforts. So quickly I move on.
when we are going to talk about growth, पहली चीज आती है कि growth का एक potential होता है जो ग्रो करने वाली चीज के अंदर पाया जाता है. So it's not only the things we are talking about here, we are talking about the human beings. I would like to know, what do you understand from the word potential? जब आप ये लफ्ज सुनते हैं तो आपके माइंड में क्या आता है? So please be alive and just feel at home. जहाँ पर जब मैं कह रही हूँ कि feel at home, that means just show that you are part of this class. आप क्लास के अंदर मौजूद हैं और इसको on site के वे में हम लेके चले. Although it is online, लेकिन इसमें आप जितना इन्वॉल्व रहेंगे उतना ज़्यादा अच्छे से हम सीख सकेंगे. So when the word potential comes before you, what do you understand? Can I answer? Yes, please. But potential means the ability of an individual to develop something, develop or learn something. Great. Anyone? Thank you, Tabitha. Anyone else? Ji Mohammed Nabil Saab. Potential is something that a person knows that he is capable of doing things, that the inside, the inner ability to achieve. Or you can say something which has not been achieved, but there is a vibe of the activity that they can be achieved. तो जैसे आपने कहा ना कि जैसे एग्जाम्पल भी आपने दी, एग्जाम्पल तरीके से कि अगर हम नॉर्मल एनिमल्स की बात करते हैं तो एक बकरे की एक जात होती है जिसमें इसको हम टेडी बकरा बोलते हैं. तो उनकी एक लेंथ जो है ना वो वो उनकी कद काट जो है ना वो छोटी ही होती है. वो पूरे भी हो जाते हैं तो उनका पोटेंशियल ये है कि वो इस फिट तक ही लंबे होंगे. तब आप उसको कितनी भी कोशिश कर लो उसकी हाइट जो है ना वो उससे ज्यादा लंबी नहीं होगी. तो दिस इज समथिंग कि आपको वो पता होना चाहिए कि इसकी मैक्सिमम रेंज क्या है. तो दैट इज समथिंग पोटेंशियल इन सिंपल वर्ड्स, द मैक्सिमम कैपेबिलिटी ऑफ समवन टू अचीव what they want to. That is something which is need to be understood first. Thank you so much. Very well answered. Anyone else would like to add something? Sumbul, ji. Potential, in my thinking, is like the energy or willingness, maybe sometimes, to do something or go to your maximum capabilities. Great, thank you. So यहाँ पे हम रुकते हैं और आगे देखते हैं कि पोटेंशियल जो है वो किसी भी लैंग्वेज में आप देखें तो भारी भरकम लफ्ज है. इसका मीनिंग एक्साइटिंग होगा, इसका मीनिंग जो है वो प्रॉस्पेरिटी से रिलेट करेगा, हैप्पीनेस से रिलेट करेगा, इसका मीनिंग जो है वो सक्सेस से रिलेट करेगा, इसका मीनिंग जो है वो आपके बढ़ने से, फैलने से, आपकी एक्सपेंशन से रिलेट करेगा. सो इट इज़ अ पावरफुल वर्ड इन एनी लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड. और आपने जिस तरह से इसको बयान किया है, इट्स यू नो रियली रिमार्केबल कि आप इसको देखते हैं कि किस तरह से कोई भी जो इंडिविजुअल है उसकी वो मैक्सिमम, हम बात इंडिविजुअल पे फोकस रखे हुए हैं, इस वजह से उसकी बढ़ने की मैक्सिमम कैपेसिटी जो है उसको रीच करना. और जैसे नबील साहब ने एक हवाला दिया है वो खास किस्म के बकरे का, लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट अ ह्यूमन बीइंग, तो इंसान के अंदर उसके टैलेंट और उसकी ग्रोथ के हवाले से वी डोंट थिंक सो दैट ही इज लिमिटेड. द मोर यू ग्रो द मोर यू कैन ग्रो. जितना ज़्यादा आप अपने टैलेंट में डेवलप होते हैं उतना ज़्यादा आप ग्रो कर सकते हैं, उतना ज़्यादा आपकी एक्सपेंशन होती है. सो इस चीज़ के हवाले से कि हम अगर देखें कि इंसानी पोटेंशियल जो है उसका मैक्सिमम क्या है, इंसानी पोटेंशियल जो है उसकी मैक्सिमम लिमिट क्या है, तो नोबडी कैन मेजर इट, नोबडी कैन पुट पीरियड, एक फुल स्टॉप उस पर नहीं लगा सकते हैं, एंड नोबडी कैन मार्जिनलाइज इट, कोई भी उसको मार्जिनलाइज नहीं कर सकता है. और अब इस चीज़ को जब हम देखते हैं कि नाउ टॉकिंग अबाउट आवरसेल्व्स, हम जब यहाँ पर मौजूद हैं एंड वी आर इन दिस सेशन,
we are about our personal growth और हमारी पर्सनल एंड प्रोफेशनल ग्रोथ के हवाले से हम बात करने जा रहे हैं. सो आई बिलीव आप जो सारे यू नो लाइक वेल प्रोफाइल्ड लोग हैं, हाई प्रोफाइल लोग हैं जो हमारे साथ मौजूद हैं, एंड डेफिनेटली लाइफ इज़ नॉट ईजी फॉर यू, और ज़िंदगी में बहुत सारी मसरूफियात और बहुत सारी चीज़ें हैं, और आप जो यहाँ पर आए हैं तो डेफिनेटली उन सबको मैनेज करते हुए आए हैं. उनके साथ साथ आप देख रहे हैं कि दिस इज़ वन एरिया वेयर यू कुड ग्रो, और आप इसमें ग्रो करें. इसकी वजह से जो आपकी HR की कैपेसिटी है वो और ज़्यादा एक्सपैंड हो, आपकी ये टेरिटरी जो है वो और ज़्यादा वसी हो जाए. सो इसलिए यू हैव टेकन टाइम आउट टू कम एंड लर्न. और जब आप इसके हवाले से देखते हैं कि you are here to learn, I believe everyone has a plan. And it's not that we only plan the things professionally, और sometimes जो है वो बहुत से लोग ये अगर आप इस टाइम पर देखें तो ह्यूमन रिसोर्स का कोर्स करने के हवाले से आपने एक प्लान किया है, आपने टाइम निकाला है, आपने अपने रिसोर्सेज को काम में लाया है, यू हैव डेफिनेटली बजटेड, और बहुत सारी चीज़ों को आपने मद्देनज़र रखा होगा. रमज़ान का टाइम चल रहा है, उसमें आपने अपने टाइम को देखा होगा. दिस टाइम इज़ गोइंग टू बी ओवर सून, और उसके बाद आप इसको कैसे मैनेज करेंगे वो भी यकीनन आपने अपने माइंड में रखा है, बिकॉज इट्स गोइंग टू बी फर्दर आफ्टर रमज़ान. सो ये सब चीज़ों के देखने में एक बात को आई हैव टू मेक वेरी क्लियर, दिस इज़ योर प्रोफेशनल ग्रोथ. और अगरचे ये आपकी लर्निंग कैपेसिटी को एनहांस करे, और आप ही हैं जो HR के बारे में सीख रहे होंगे, बट डोंट थिंक दैट दिस इज योर पर्सनल ग्रोथ एज वेल. अगर आप इसको अपनी पर्सनल ग्रोथ नहीं बनाते, इट इज गोइंग टू स्टे योर प्रोफेशनल ग्रोथ अलोन. जिसका मतलब ये है कि वक्ती तौर पे आपने कोई चीज़ सीख ली है, कुछ आपने पढ़ लिया, और आपको वो प्रोफेशन में तो काम आ गया, वहाँ आपकी सैलरी डेफिनेटली इंक्रीज हो जाएगी. अगर वो नहीं, आपका एक्सपीरियंस ऐड हुआ है, आप दूसरे लोगों में हाईलाइट हो गए हैं, आप दूसरे लोगों में नुमाया हैं, यू नो बेटर देन देम, but that still does not mean that you have grown in your life, और ये एंड हो गया है और इससे आगे अब आप बढ़ नहीं सकते हैं. लाइफ के डिफरेंट डायमेंशंस में यू हैव टू कंटिन्यूली ग्रो, एंड यू हैव टू ग्रो बाय लर्निंग. और उस लर्निंग के हवाले से यू हैव टू बी इंटेंशनल. आप जिस जिस एरिया में जहाँ जहाँ रुक जाते हैं और जहाँ जहाँ रोक देते हैं, वहाँ आपकी ग्रोथ भी रुक जाती है. सो जस्ट नो दिस थिंग कि अब मैं रिलेट करती हूँ इसके साथ हमारे इस वर्ड पोटेंशियल को, जिसके साथ मैंने इस सेशन को शुरू किया है. आपके अंदर किस तरह से पोटेंशियल मौजूद है वो आपके टैलेंट्स के ज़रिए से नज़र आता है, और जितना ज़्यादा आप उसे बूस्ट करेंगे उतना ज़्यादा वो ग्रो करेगा. लेकिन जिस पॉइंट पर आकर आप उसे रोक देंगे वो वहीं रुक जाएगा. सो व्हाट डू यू थिंक? डू यू हैव the potential to grow in one field alone? What do you think? Do you have the potential to grow in one area alone? So think for a while. और इसके साथ साथ देखें कि there is a lot that you are gifted with because you are formed uniquely. और उस यूनिकनेस की बात जब हम करते हैं तो हम सब इस बात से मुतफिक इत्तेफाक रखते हैं, एंड ऑल ऑफ अस नो दिस कि हमारे जो फिंगरप्रिंट्स हैं वो पूरी दुनिया में किसी और के साथ मैच नहीं होते हैं एक इंडिविजुअल के दूसरे के साथ. एंड दैट इज which is the confirmation of me being a unique individual on this planet Earth. Not only an individual, but a unique individual. So इस चीज को देखिए कि आप अपनी कौन कौन सी कैपेसिटी में ग्रो कर सकते हैं, आपके अंदर पोटेंशियल क्या है, और आप क्या उस पोटेंशियल की सारी लिमिट्स को पहुंचे हैं. जितना ज्यादा पहुंचे उतना ज्यादा आप ग्रो कर सकते हैं.
मैं यहाँ पर एक सवाल आपके सामने रखना चाहूंगी. Just for a moment, आंखें बंद करके ये बात सुनिएगा. I'm not there to see you. You are not here. So, आंखें बंद करके इस बात को सुनते हुए, just imagine for a moment, it's an activity that you can do. Imagine for a moment the tallest building in the world. यकीनन आपने imagine कर लिया. So open your eyes and listen to my question and close your eyes again. आपने imagine किया है और वो imagination में क्या आया है थोड़ा सा मुझे पहले बता दे and then we move further. Which is the tallest building in the world? आप अनम्यूट करके बता सकते हैं या मैसेज पे आप बता सकते हैं. बुर्ज खलीफा, बुर्ज खलीफा, बुर्ज खलीफा दुबई. ठीक, थैंक यू. मुझे लगा कैमरा में नजर नहीं आ रहे हैं और म्यूट भी हैं तो ऐसा नो चलेगी. थैंक यू. बुर्ज खलीफा, yes, all are right. Would you mind closing your eyes again and think one thing? Could there be any other building taller to this one? अभी है नहीं है लेकिन क्या हो सकती है? You can answer. इसके लिए आपको आंखें बंद करने की जरूरत नहीं थी. This is something obvious कि yes, although for now it is the tallest building, but we cannot say that it is the tallest forever, and there cannot be any other building taller than this one. So हम कह सकते हैं ना कि somehow for now it is the tallest, but still the world has the potential to build taller than that tallest building. So likewise, कोई भी बात, कोई भी चीज जिसके हवाले से आपके अंदर अगर पोटेंशियल है और आप उसके एक्सट्रीम पे पहुंच कर ये कहते हैं कि बस मैंने जो करना था वो कर लिया, इससे ऊपर कुछ नहीं हो सकता है, तो this is something, a wrong concept, a wrong thinking, a wrong perception. आप being human, you are uniquely formed, we are uniquely formed, and we are the creation which is called the crown of creation. अशरफुल मखलूकात कहलाए हैं हम लोग. This is why we know that we have the ability to grow as much more as we want to be. अब यहाँ पर आकर उसके लिए डेफिनेटली रिसोर्सेज चाहिए, और जो रिसोर्सेज हमारे इर्द गिर्द अवेलेबल हैं हम उनका कितना इस्तेफादा करते हैं, इट डिपेंड्स ऑन अस. उनमें हम कितना ग्रो करते हैं, इट डिपेंड्स ऑन अस. हम जिस एनवायरनमेंट में हैं उस एनवायरनमेंट से हम कितना इस्तेफादा कर रहे हैं, डेफिनेटली डिपेंड्स ऑन अस. सो इस वजह से इस चीज़ के हवाले से मैं अभी यहाँ पर बात करने जा रही हूँ दैट यू नो इन आवर लाइफ, हमारी ज़िंदगी के अंदर ग्रो करने के लिए हमें जब प्रोफेशनल लाइफ में हम आ जाते हैं तो अक्सर फुल स्टॉप लग जाता है और हम ये समझते हैं कि बस ये मेरी फील्ड है, ये मेरा प्रोफेशन है और इधर तक मुझे पहुंचना था, या उसी के हवाले से हम लोगों ने एक लिमिट सेट की होती है एंड वी कंटिन्यू समहाउ वेस्टिंग टाइम, या वी कंटिन्यू कॉम्प्रोमाइजिंग विद इट कि जिधर हम पहुंच गए हैं, जितना हम पहुंच गए हैं ये काफ़ी है, शायद इससे आगे कुछ नहीं है. हैट्स ऑफ टू यू ऑल. अब सबको मैं अप्रिशिएट करना चाहूँगी दैट यू ऑल हैव टेकन टाइम, यू ऑल हैव डिसाइडेड कि एटलीस्ट आप अपनी इस फील्ड में ग्रो करें, आप अपने नॉलेज में ग्रो करें, लेकिन इसके साथ साथ ज़रूर देखिएगा कि क्या ज़िंदगी में यही है जिसको आपने टारगेट किया हुआ है और यही वो पर्पस है जो आपने अपनी ज़िंदगी के बारे में जाना है. सो व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ योर लाइफ? Do you think that just growing in this particular field is all that you can do?
एंड डोंट थिंक मैं यहाँ पर जो है वो ह्यूमन रिसोर्स के हवाले से प्रोग्राम में ऐड हुई हूँ. So I would only talk about the growth in human resource. No, my topic covers beyond this. और उसमें आकर it is about the purpose of your life. और आपकी जिंदगी के मकसद में आपकी अचीवमेंट क्या है, आप किस तरह से ग्रो कर रहे हैं, how have you planned it? So this is about the question which is on the display. What do you want out of life? आप जिंदगी में क्या चाहते हैं? Which means your goal, which means that is your destination in life. You are on the go, but what is your goal? और ultimate goal क्या है जिसको आप लाइफ में अचीव करना चाहते हैं? Because life is a one-time thing. ये एक ही बार में मिली है और जो कुछ करना है आपको इसी में करके जाना है. You are not going to have any second chance, second opportunity to live and, think of the goal again and pursue for the goal again. So if you can take time and write down beyond this course, what is the goal of your life? ये तो आपका एक करियर गोल है, लेकिन आपका लाइफ का गोल क्या है? So करियर गोल में आप इस टाइम ये कोर्स कर रहे हैं, इसके बाद आप कोई और करेंगे. जैसे यहाँ पर नबील साहब हैं, नेशनली भी उन्होंने लर्न किया है, इंटरनेशनली भी 13 years में, एंड ही स्टिल कंटिन्यूज. और लोग हैं आप साथ में, बट आर यू just to add, मैंने अपना पूरा बताया नहीं है. I'm just pursuing my third master's MSc in business psychology from University of East London, and simultaneously I did n number of certification, but still life is going on. I am a teacher also by profession. I teach also. Teaching is my passion, but learning continues. So let me start. It's like my life learning journey is to humanitarian point, to be a good human being, to help others, religiously to be a good Muslim, and professionally to be get educated and to be a person who can contribute in an organization by all means. This is my mission and goal. All right, thank you for sharing. Would anyone like to share with us? Otherwise, कोई और शेयर करना चाहेगा कि आपकी लाइफ का गोल क्या है, करियर गोल के अलावा लाइफ का गोल? As he said that he is on the move to become a good Muslim, a good human being, and to educate others. यानी जो knowledge उनके पास है, to impart that to others. So would anyone like to share your life goal with us? And are you on the move to achieve that goal? Thank you. आप रख देंगे अभी? I just cannot. Yeah. Thank you. It's okay, even if you don't want to. Let's move on. But thank you, Nabil Saab, for sharing. Now, here comes, after that question, here comes the answer, the law of intentionality. So growth does not just happen. Whatever the goal you have in life, वो तो हो गया destination आपकी, लेकिन अगर आप उसकी तरफ ट्रेवल नहीं करना शुरू करते तो आप अपनी गोल, अपनी डेस्टिनेशन की तरफ मूव नहीं करते, आप उसको रीच नहीं करते हैं. और हम ये जानते हैं कि इंसानी बदन में हम देखते हैं कि एक लिमिट है, ग्रोथ होती जाती है, हड्डियां बढ़ रही हैं, हमारी स्किन मैच्योर होती जाती है, ब्रेन मैच्योर हो रहा होता है, अपने साख्त में, बनने में. बट जो विजडम और नॉलेज है
वो उसके लिए अटेन किया जाता है, वो उसके लिए गेन किया जाता है। रिलेशनशिप्स हैं, उनकी स्ट्रेंथ के लिए काम किया जाता है, वरना रिलेशनशिप्स ग्रो नहीं करते हैं। आपका करियर, आपका प्रोफेशन, दैट डज नॉट ग्रो इवन इफ यू डोंट वर्क ऑन दिस। सो आपके फाइनेंसेस ग्रो नहीं करते हैं इफ यू डोंट वर्क ऑन दैट। इसलिए आपकी ग्रोथ के हवाले से यू ऑलवेज हैव टू बी इंटेंशनल। और जिस भी लिहाज से आप ग्रो कर रहे हो, अगर आप उस ग्रोथ में आगे नहीं आते हैं, आप उसमें किसी भी तरह से यू आर नॉट मूविंग एंड एक्सेलिंग, तो आप बढ़ नहीं सकते। और अभी बात जब हो रही है कि लॉ ऑफ इंटेंशनैलिटी, तो प्लीज नो दिस वन थिंग, दैट इट इज अ लॉ। और लॉ जो है, इट इज अ ड्यूटी, इट इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, and from the duty, if you go here and there, तो आपकी जिम्मेदारी से हटने का नुकसान आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। आप HR के लोग हैं, आप ये जानते हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज या ड्यूटी क्या है। सो अगर आप लॉ ऑफ इंटेंशनैलिटी नहीं अपनाते हैं, तो यू कैन नॉट ग्रो इन लाइफ, बिकॉज ग्रोथ डज नॉट जस्ट हैपन। ये एक टाइम है कि हमारी बॉडी जो है वो ग्रो कर गई है, हाइट ग्रो कर गई है, लेकिन उसके बाद एक टाइम है कि इसको हेल्दी रखने के लिए वी हैव टू ईट। एक टाइम है कि हमने मैट्रिक कर लिया, हमने जो है आगे इंटरमीडिएट कर लिया, हमने जो है वो बैचलर्स कर लिया, हमने मास्टर्स कर लिया, लेकिन एक टाइम तक जितना आपको पढ़ा दिया गया, उसमें भी आकर बहुत सारे लोग आप देखें इंटेंशनली, यूनिवर्सिटीज मौजूद हैं, पेरेंट्स मौजूद हैं, फाइनेंसेस मौजूद हैं, और कई बार बहुत लोग हैं जो दे पे फॉर देमसेल्व्स, और वो एक लेवल पे, एक टाइम पे आकर जो है अपनी स्टडी को खुद फाइनेंस करते हैं। बट दैट इज द टाइम कि वहां अगर वो खुद नहीं कर सकेंगे तो नोबडी विल डू दैम। हो सकता है कि कोई उनके लिए करने को मौजूद नहीं है। सो इफ दे आर नॉट डूइंग, हाउ दे कैन ग्रो? सो एक टाइम है जहां पर चीजें आपके लिए ऑटोमेटिकली होती हैं, when you have others around you, or when it is the move of nature। लेकिन एक टाइम है उसके बाद आकर चीजें आपके लिए खुद ब खुद नहीं होती हैं, and that is the time when intentionality starts, जहां पर आकर merely चीजें intentionality पर rely करती हैं। If you are not intentional, you are not growing। क्विकली मैं बताती चली जाऊं, अदरवाइज हमारे इस कोर्स के अंदर बाकी जो लॉज हैं उनका इंट्रोडक्शन। फर्स्ट वन इज लॉ ऑफ इंटेंशनैलिटी, व्हिच सेज ग्रोथ इज द ओनली गारंटी दैट टुमारो इज गोइंग टू गेट बेटर। यस, अगर आप आज ग्रो कर रहे हैं तो आने वाला दिन अच्छा होगा, लेकिन अगर आप आज कुछ नहीं कर रहे, आज ग्रो नहीं कर रहे हैं, तो डोंट एक्सपेक्ट दैट टुमारो इज गोइंग टू बी अ बेटर डे। नो। Then the law of awareness, the second law, इसमें no one can produce great things. No one can produce great things if he is not thoroughly sincere in dealing with himself. So अगर हम अपने बारे में नहीं जानते हैं और अपने साथ हम सिंसियरली डील नहीं कर रहे हैं, तो हम कुछ और अच्छा बेहतर कर नहीं सकते हैं। यहाँ पर आकर एक बात यही ऐड करना चाहूंगी कि many a times you know that this is the destination, लेकिन अगर आप यही अवेयर नहीं है कि आप कहाँ खड़े हैं, तो आप कैसे किसी भी राइड को अगर बुक करते हैं या किसी को बताते हैं कि वो आपको पिक करें, तो वो कहाँ से आकर आपको पिक करेंगे? It is really important to grow in life to know where you are standing. आप जहाँ हैं वहाँ आप किस पोजीशन पर हैं, और वहां से आगे क्या है, वहां से आगे और ज्यादा क्या हो सकता है। सो बीइंग अवेयर ऑफ योरसेल्फ, कितना नॉलेज है आगे बढ़ने के लिए, आपको और कितना नॉलेज चाहिए है, आपके पास अभी कितने रिसोर्सेज है, आगे बढ़ने के लिए कितने रिसोर्सेज चाहिए, जो कुछ आप करने जा रहे हैं अभी उसका क्या फायदा है, और आने वाले टाइम में इन अ लॉन्ग रन उसका क्या फायदा होगा। सो दिस इज हाउ यू हैव टू बी अवेयर ऑफ योरसेल्फ, ऑफ योर थिंग्स, ऑफ योर सराउंडिंग which are relevant to you. This is the law of awareness which helps you grow. And then the law of mirror, this says the most important words you hear every day are the words that come out of your own mouth.
I believe you all are going to agree with this. सबसे ज़्यादा अगर हम हर रोज़ सुनते हैं किसी को तो वो हम अपने आप को ही सुनते हैं. सबसे ज़्यादा हम कलामी जो है ना, कलाम जो हो रहा होता है वो हम कलामी हो रही होती है. सो हम अपने आप के साथ बात कर रहे होते हैं. I believe you agree and thank you for those who are sending their responses in the chat. I appreciate that. So यकीनन आप इससे भी एग्री करेंगे. तो अब फिर देखना है कि हमारा अपने आप से हम कलाम होना किस तरह का है. What type of words, what type of thoughts we are thinking about ourselves. If you think positive, you do positive and outcome is positive. If you think negative, definitely your action becomes negative. Actions become negative and your output that definitely becomes negative too. So इस चीज के हवाले से हम देखते हैं. Thank you, Sambal, for being agreeing on this. And then law of reflection आता है mirror के बाद. थोड़ा सा ये order different हो गया. So law of mirror के बाद यहाँ पर जो लिखा है law of consistency, ये आप खुद जानते हैं कि if we start something today and then we give it a break, and then after a certain time we think to start again and then give it a break. तो ये कब होता है कि कोई बीज आपने आज बोया है और आपको याद आ जाए तो आप उसे पानी दे दें और फिर आप भूल जाएं और फिर जब याद आ जाए तो पानी दे दें और आप एक्सपेक्ट करें कि वो एक फ्रूटफुल प्लांट की सूरत में आपके सामने होगा. It does not happen. So you have to be consistent about that. Likewise, the only way you can become excellent is through consistency. No one is good at anything the first time, लेकिन हम अगर मतवातर चीज़ों को सीखते चले जाते हैं, सो एक बार गिरेंगे, दो बार गिरेंगे, वीक होंगे, लेकिन gradually we move on to receive and gain the strength. Then it's law of environment. जैसे अभी मिसाल दी है नबील साहब ने बकरे की, तो उस टाइम पे ये एग्जाम्पल मेरे सामने आ रही थी. So there is an example that we share under this law कि शार्क जो है वो हम जानते हैं समंदर के अंदर मीटर्स में एक्सपैंड करती है, लेकिन जब उसको एक पॉन्ड में रखें आप जो कि फ्यू फीट का हो, तो कुछ फुट के उस पॉन्ड के वो एक्वेरियम के अंदर, सॉरी फॉर द पॉन्ड, एक्वेरियम के अंदर अगर आप उसको रखेंगे तो उसकी जो लेंथ है वो उतनी ही एक्सपैंड करेगी और उससे ज़्यादा नहीं होगी. सो इसका मतलब उसका एनवायरनमेंट मुतासर करता है उसकी ग्रोथ को, और वो बढ़ नहीं सकती अपने कद में. लेकिन जैसे ही आप उसको समंदर में डाल दें तो डेफिनेटली लाइक इट ग्रोज ह्यूजली, वो बहुत वसी तौर पर ग्रो करती है. सो इसी तरह से इट इज़ रियली इम्पॉर्टेंट टू ग्रो इन लाइफ टू बी वेयर ऑफ योर एनवायरनमेंट. आप अपने उस एनवायरनमेंट को ऑप्ट करें कहाँ आपके लिए ग्रोइंग एनवायरनमेंट है, और अगर है नहीं है और आपके पास चांस नहीं है कि आप यहाँ से मूव कर सकें, बिकॉज यहाँ पर अब मैं बात करूँगी तो नॉट एवरीवेयर इज लाइक ऑर्गेनाइजेशन और कंपनी जहाँ आप एक ऑर्गेनाइजेशन से दूसरे में मूव कर सकें. स्कूल्स, इंस्टीट्यूशंस में आपको एक जगह अच्छा नहीं मिला, आप दूसरी जगह जाके कर सकें कोर्स. Now when it comes to family, when it comes to relationships, तो वो भी आपके साथ होते हुए आपका एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं, और वहाँ पर आप क्या करेंगे. सो ऐसे में you got to create your environment. So it is the law for another day to discuss, not in this course, but otherwise if would like to. Then there is law of design. The only way you can expand your life and make it better is to grow in that area. So हम देखते हैं क्विकली एक एग्जांपल के साथ कि अगर 3D व्यू लिया जाए और स्पेस से
इसका प्लैनेट अर्थ का, तो जो नुमाया नजर आने वाले कैपिटल्स हैं वेल ऑर्गेनाइज्ड, इस्लामाबाद उनमें से एक है। और अदरवाइज भी जो इस्लामाबाद रहते हैं या जिन्होंने विजिट किया है, दे गेट टू नो कि इसकी एंट्रेंस पे लिखा हुआ है इस्लामाबाद द ब्यूटीफुल। सो यस, इट इज ब्यूटीफुल। और उसकी ब्यूटी की वजह क्या है? दिस डिजाइन थिंग, इसको प्लान किया गया और उस हवाले से इसको डिजाइन किया गया, और डिजाइन की वजह से इट स्टैंड्स टॉल अमंग्स ऑल other cities and cities around the world. So उस डिजाइन की वजह से वो कह लें कि नुमाया है, मिलियंस सिटीज के अंदर प्रोमिनेंट है। लाइकवाइज द लाइफ वेल डिजाइंड, वेल प्लान्ड, इट एक्सेल्स एंड इट स्टैंड्स आउट, वो नुमाया तौर पर जो है नजर आती है। सो ये लॉ ऑफ डिजाइन is another law to grow. Then law of pain, इस हवाले से मैं अगर पूछूं तो सभी जवाब देंगे कि कोई जिंदगी ऐसी हो जिसमें दर्द ना हो। So there is no life without pain. और कोई शख्स ऐसा हो जिसको आप कामयाब समझते हैं, कामयाब जानते हैं, और आप उसे कभी भी सुने कि उसकी कामयाब जिंदगी में कोई पेन ना हो और उसके उस सफर में, उसके उस जगह तक पहुंचने में कोई अप्स एंड डाउन्स ना आए हो जिससे उसको तकलीफ ना पहुंची हो, तो ऐसा कोई शख्स आपको पूरी दुनिया में नहीं मिलेगा। इसलिए आपकी ग्रोथ के लिए ये चीज जरूरी है कि वी ऑल गेट टू हैव बैड एक्सपीरियंसेस इन आवर लाइव्स, but the good management of bad experiences leads to great growth. मैं रिपीट करती हूँ, the good management of bad experiences leads to great growth. So not every experience gives us learning. हर एक्सपीरियंस नहीं देता, सिर्फ वो एक्सपीरियंस जिससे हम लर्न करना चाहें। और कई बार हम बैड एक्सपीरियंसेस पे इमोशनली हर्ट होके बैठे रहते हैं, हम उससे कुछ भी नहीं सीख रहे होते, लेकिन जिस टाइम हम उनसे सीखना शुरू करते हैं और उनके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स को देखते हैं और हम देखते हैं कि इफ दिस थिंग हैज हैपेंड टू मी, हाउ कैन आई वर्क आउट ऑन दिस दैट इट शुड नॉट हैपन टू समवन एल्स, तो वो डेफिनेटली हमारे लिए गेन बन जाएगा। सो व्हेन देयर इज नो पेन देयर इज नो गेन। सो दिस इज वन of the laws of personal growth. And then there is law of reflection. So reflection को law हमारी ये मदद करते हैं जानने में कि हम जिंदगी में पॉज लेना सीखें। कई बार हम इस कदर मसरूफियत में चल रहे हैं कि we continue growing, running. So when I'm saying growing, actually it's going. So हम कंटिन्यू रखते हैं, जिंदगी में आगे बढ़ते जा रहे हैं और हम देख नहीं रहे हैं, रुकते नहीं हैं, पॉज नहीं लेते हैं। So I don't know आप में से कितनों ने वो देखा हो जो एक टेप रिकॉर्डर हुआ करता था पास्ट में, और जब इनिशियली ये सब चल रही थी चीजें, तो वो टेप रिकॉर्डर में जब एक कैसेट डाले जाती थी और उसकी एक टेप होती थी, सो अगर आप उसको प्ले करते जाते थे तो उस टेप रिकॉर्डर पर एक प्ले बटन के साथ पॉज बटन भी होता था। पॉज बटन हम आज भी देखते हैं कि ये बेशक डिजिटल आ गया, था सिस्टम आ गया, उसमें भी है, बट उसकी एग्जांपल इसलिए दे रही हूँ कि वो इस कदर अगर हम उसको बार बार प्ले करते जाते थे तो वो रीप्ले जो है वो हीट अप कर देता था, क्योंकि वो सारे उसके जो चल रहा होता था, जो सिस्टम और जो इंजन उसका जिस भी तरह से है, सो वो उसका मैकेनिज्म जो है वो हीट अप हो जाता था, और करते करते वो टेप जो है वो गर्म होके वो फैलना शुरू हो जाती थी, और जैसे वो एक्सपैंड करती थी और एक टाइम आता था कि वो बीच में अटक जाती थी, और अगर आप उसको पॉज नहीं करते और आपने उसे टाइमली पॉज नहीं किया और अगर आपने नहीं ख्याल रखा होता तो वो खुद से उसको जब वो खराब हो जाती, जब वो अटक जाती, तो वो पॉज ले लेती, यानी पॉज आ ही जाता, वांटेड नहीं होता था
अनवांटेड पॉज, अटक गई, रुक गई और एक खराब सी आवाज आना शुरू हो गई, एंड देन यू वुड स्टॉप एंड सी ये क्या हो गया, मैंने तो इसे प्ले किया हुआ है, तो यहाँ पर ये क्या हुआ है, क्यों अटक गया है, एंड देन यू फाइंड आउट कि वो टेप जो है वो अटक गई है, टेप जो है वो टूट गई है, एंड यू नो यू हैव मेड अ लॉस, और कोई नुकसान है जो आपने कर दिया यहाँ पर. So not only you have met a loss, but actually you have made a loss. So इस चीज को देखने के लिए that you know, if you don't reflect and you take a pause in your life on daily basis, so there is something which happens, and that something is that आप रुक कर चीजों को नहीं देख रहे, आप अगर नहीं उन पर गौर कर रहे on daily basis, it can be like maybe once a week. It can be, you know, a certain time जिसके बारे में आपको intentional होना है, और आप बैठे और आप बैठकर अपनी लाइफ के बारे में ये देखें कि how are the things going on in my life, आप उन पे रिफ्लेक्ट करें. और अगर आप रिफ्लेक्ट नहीं करते, अगर आप रिव्यू नहीं करते उन चीज़ों को, अगर आप झांकते नहीं हो हर एक चीज़ के जो आपके इर्द गिर्द हो रही है, दैट यू आई मीन इर्द गिर्द से मुराद है जो आपसे रिलेटेड है. सो अगर आप उसमें रिफ्लेक्ट नहीं करते, होने दे रहे हैं, तो फिर ऐसा एक टाइम आता है कि लाइफ आपको खुद यू नो रोकती है. और तब जब रोकती है उस टेप रिकॉर्डर की एग्जांपल की तरह, तो देन यू ऑलरेडी हैव लॉस्ट. आपने कुछ ना कुछ उस टाइम पे नुकसान कर दिया होता है, कुछ ना कुछ डिस्टर्ब हो चुका होता है. सो इस हवाले से आई डोंट नो how many are into the practice of reflecting on your day, और आप बैठकर पूरे दिन पर गौर करते हैं, और you reflect in the morning about the things, or you reflect about the things once a week. कितनों के reflection chair मौजूद है, but this is really required in our life. And for this you also have to be intentional. अगर आप मसरूफियात को लेकर देखें तो जिंदगी बिजी रहेगी और आपके पास इसके लिए टाइम नहीं होगा, लेकिन इसके लिए भी आपको इंटेंशनल होना पड़ेगा, ताकि आप ग्रो करने के हवाले से ये देखें what should be there, what should not be there. अगर कुछ ऐसा है जिसको आपकी जिंदगी से एग्जिट होना चाहिए है, ऐसी हैबिट्स, मे बी ऐसे लोग जो आपकी ग्रोथ को हिंडर कर रहे हैं, एंड मे बी एनी एक्टिविटी जो हिंडर कर रही है, हो सकता है एक्सेसिव यूज ऑफ मोबाइल है, एक्सेसिव you know, it can be anything. और अगर आप रिफ्लेक्ट करते हैं, sometimes it can be that if you reflect which thing is affecting your health, so that can be your you know sleeplessness. तो आप गौर करके फिर आप अपनी नींद को ज़्यादा टाइम दे सकते हैं. Then you know your diet, जिसको आप देखें क्या अनहेल्दी ऐड किया है, क्या हेल्दी है उसमें जो ऐड करने की ज़रूरत है. सो दैट इज़ हाउ यू कैन ग्रो इन लाइफ. जहाँ पढ़ने की, रीडिंग की हैबिट्स बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी से ख़त्म हो गई है, एंड यू नो यू स्क्रॉल अ लॉट बट यू डोंट गेट टू लर्न अ लॉट. तो इस हवाले से यू कैन रिफ्लेक्ट एंड सी द थिंग्स. And quickly, then there is another law which is mentioned here, the law of ladder, and it is you've got to be bigger on the inside than you are on the outside. So कभी भी कोई भी चीज जो हमारे सामने हम देखते हैं बन के आई है या तैयार हुई है, सो वो किसी सोच का रिजल्ट है. सो अब जब आप इस चीज को देखें कि जितना आपकी बिल्डिंग हायर है, आप लैडर को उतना ऊंचा ले जा सकते हैं. इसलिए यहाँ पर स्टेयर्स का जिक्र नहीं है, यहाँ लैडर्स कहा गया है. और लैडर के हवाले से दैट इट इज अ स्ट्रॉन्ग पार्ट ऑफ योर ग्रोथ. दैट लॉ ऑफ लैडर में आप सीखते हैं कि जितना आप अपनी सोच को बड़ा करेंगे, एज वी जस्ट स्पोक अबाउट पोटेंशियल, जितना आप ग्रो करते हैं, देन यू गेट टू नो दैट यू हैव मोर to offer, the more to offer to the world, and the more you can grow. Now we move on to the law of rubber band. और अब यकीनन सब इस बात से मुत्तफिक होंगे कि the law of rubber band, wow, thank you those who do reflection and who reflect on their lives once or twice a week, once in 2 weeks. Great, thank you.
So now it is the law of rubber band we are talking about. Law of rubber band में आकर हम ये देखते हैं कि सिंपली रबर बैंड एक्सपैंड करने के लिए है. जब वो रिलैक्स स्टेट में रहता है तो दैट इज नॉट व्हाट इट इज मेड फॉर. और इसी तरह से कहा जाता है दैट शिप्स आर नेवर मेड टू स्टे ऑन हार्बर. वो किनारे पे रहने के लिए नहीं बनाई जाती हैं कश्तियाँ. लाइकवाइज हमारी जिंदगी में हम देखें कि अगर कंफर्ट जोन दिख रहा है, अगर जो है वो हम एक्सपैंड नहीं कर रहे, स्ट्रेच नहीं आ रहा, तो इसका मतलब है कि वी आर नॉट स्ट्रेच. अननेसेसरी भी नहीं. रबर बैंड ज्यादा स्ट्रेच कर जाए तो वो टूट जाता है, लेकिन एक खास स्ट्रेच उसको रिक्वायर्ड होता है. और जैसे हम उसको स्ट्रेच करते हैं तो वो ज्यादा चीजों को ग्रैब कर सकता है. उसकी कैपेसिटी एक्चुअली जितनी ज्यादा चीजों को ग्रैब करने की है वो उतनी ज्यादा ग्रैब कर सकता है. समटाइम्स हम स्ट्रेच आउट नहीं करते, आउट ऑफ द बॉक्स जाके चीजों को जब नहीं करते तो हम बहुत कुछ अपनी लाइफ में ग्रैब नहीं कर पाते हैं. एक्सक्यूज मी. सो उस वजह से हम ग्रो नहीं कर पाते हैं. टू हैव अ गुड ग्रो इन लाइफ you have to expand and stretch out as well. Next is the law of trade-offs. The higher the climb, the tougher the trade-offs. So इसमें भी आकर ये है, many times to gain one thing you have to leave the other. आपको जब स्टेप करते हैं और आगे बढ़ते जाते हैं तो अगर आप स्टेप बाय स्टेप ऊपर चढ़ रहे हैं तो आप अगले स्टेप पे नहीं जा सकते जब तक आप पिछले स्टेप को नहीं छोड़ेंगे. जिंदगी में बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जिनके लिए हमें ट्रेड ऑफ करना पड़ता है, और वो ट्रेड ऑफ इसलिए करना पड़ता है, इट इज ऑलवेज फॉर गुड. बहुत सारे लोग अच्छी जॉब के लिए शहर छोड़ने का ट्रेड ऑफ करते हैं. अगर उन्हें अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, why would they not like to stay in another city, go there and earn more? So many times people trade off, like as you have traded off for this thing. हो सकता है इस टाइम में आपकी और बहुत सी एक्टिविटीज होती हों, लेकिन आपने उन सब को रोक दिया है और उनके बदले में you are utilizing your time, consuming your time at this moment to learn even more. So this is how the law of trade-offs work with our growth, our personal growth. हम उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें छोड़ते जाते हैं जो हमारे लिए फिर नेसेसरी नहीं रहती हैं या अनहेल्दी होती हैं हमारी ग्रोथ के लिए, और हमें देखना पड़ता है कि क्या ऐसा है जिसको हमें अब छोड़ना है ताकि हम कुछ और आगे कर सकें और बढ़ सकें. So trade-off is tough, but it's worthwhile. Then there is law of curiosity. इसमें आकर if curiosity, imagination, creativity takes us beyond ordinary. यहाँ पर आकर you never stop thinking about the things. You never stop thinking that why it was created, how it was created. So those whys, what's, who's, how, this should remain in your life so that you can learn more. The more you question about the things, the more you learn about the things. जहाँ आके curiosity खत्म हो जाती है, learning खत्म हो जाती है. And then there is law of modeling, जिसमें हम ये देखते हैं, as you all are leaders here, that as a leader, your first step is not to lead, but to be successfully credible. So इससे पहले कि आप लीड करना शुरू करें, आप दूसरों के लिए ऐसी एग्जाम्पल सेट कर चुके हैं, कर रहे हैं, जिसमें आकर लोग आपको फॉलो करना चाहेंगे. सो इसलिए आप इस बात को अपने सामने पहले रखते हैं कि मैं कुछ भी करने जाऊं, मैं उनके लिए रोल मॉडल हूं. हाउ डू आई हैव टू डू दैट थिंग, एंड देन यू स्टेप आउट टू लीड. एंड देन लॉ ऑफ एक्सपेंशन, stop asking how long will it take, start asking how far can I go. इसका मतलब कि आप अगर कोई एक गोल जिंदगी में सेट करते हैं, let's say in 5 years from now, आपके पास आपका गोल अगर मौजूद है कि ये मैंने 5 साल में कर लेना है, ये मैंने अचीव कर लेना है, तो what if you really have done that in 5 years, और हो सकता है कि आप 5 साल से पहले कर पाए उसको अचीव. तो अगर आपने
उसको लेट्स से 4.5 साल में 4 साल में अचीव कर लिया है, फिर क्या करेंगे? क्या आप ये कहेंगे कि बस मैंने कर लिया अचीव और इससे आगे कुछ नहीं? नो, वी फ्रॉम द बिगिनिंग वी आर टॉकिंग अबाउट दिस थिंग कि हमारा पोटेंशियल हम जितना ग्रो करते चले जाएं ये उतना है। हम कभी भी लिमिट सेट करके ये नहीं बता सकते कि मुझ में इतनी कैपेसिटी है और इतना, बिकॉज वी आर ह्यूमन बींग्स। हम किसी इंसान के हाथ की कारीगरी नहीं है, वी आर नॉट मैन्युफैक्चर्ड। इस वजह से हम वहां पर कोई लिमिट सेट नहीं कर सकते हैं। द मोर वी ग्रो, द मोर वी हैव द कैपेसिटी टू ग्रो। एंड नेक्स्ट इज लॉ ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन। हम जब ग्रो करते हैं और हम थिक्स एंड थिन्स में से गुजर के आते हैं, हम जब एक्सपीरियंस्ड हो जाते हैं, हम जब अपनी लाइफ के अंदर एग्जाम्पल सेट करना शुरू कर देते हैं, तो यहाँ तक की बात काफ़ी नहीं है। हमारी ग्रोथ का एक बड़ा फ़ायदा ये है कि हम दूसरों की लाइफ में कंट्रीब्यूटर बनते हैं। इसलिए कि जहाँ पर भी आज हम हैं, इस पॉइंट तक हम अकेले यहाँ नहीं आए हैं। It's been a contribution of from the very beginning of our parents इस जमीन पर, और हमारे पेरेंट्स के कंट्रीब्यूशन के बाद जो नुमाया लोग हमें नजर आते हैं, हमारे फैमिली के, हमारे टीचर्स, फिर इसी तरह जिंदगी में बढ़ते बढ़ते हमारे दोस्त अहबाब, उनके कंट्रीब्यूशन से हम यहाँ तक पहुंचे हैं। किसी न किसी तरह किसी ने हमारी हेल्प की है, जिस वजह से आज हम जो हैं वो हैं। इसलिए हमारी ग्रोथ में द लास्ट लॉ विच इज मेंशन्ड हियर, दैट इज द लॉ ऑफ कंट्रीब्यूशन, जो बहुत अहम किरदार, जितना हम किसी की लाइफ में कंट्रीब्यूट करते हैं हम और ज्यादा ग्रो करते हैं। किस तरह से? ऐसे लोग जो दूसरों की लाइफ में पॉजिटिव कंट्रीब्यूट करते हैं वो मर के जिंदा रहते हैं, बिकॉज दे लीव अ लेगेसी। सो समटाइम्स हमारा गोल होता है कि हम अपनी ही जिंदगी में कुछ चीजें देखें, लेकिन द एक्चुअल ग्रोथ वी आर टॉकिंग अबाउट, जिसके लिए इंटेंशनल होने की जरूरत है, वो ये है कि जब आप नहीं भी हों तो आप ऐसा कर जाएं कि दुनिया आपकी ग्रोथ, आपके किए हुए काम, दुनिया आपकी लेगेसी को एक्सपीरियंस करे और आपका कंट्रीब्यूशन तब भी जारी रहे। इकबाल की शायरी बहुतों को आज मुतासर करती है। वी हैव नॉट सीन हिम इन पर्सन, we never heard him reciting anything from his books in person, लेकिन आज जो कुछ वो उस टाइम लिख गए वो हमें इन्फ्लुएंस करता है। मदर टेरेसा बहुत सारा काम ऐसा करके गई हैं कि वो आज भी हॉस्पिस, आज भी जो बाकी आने वाली जनरेशन है वहाँ पर नन्स की, नर्सेस की, वो उनके फुटस्टेप्स को फॉलो कर रही है। ईदी साहब, ही इज नॉट विद अस टुडे, बहुत सारों ने देखा है उनको और बहुत सारों ने इन पर्सन देखा है, लेकिन द लेगेसी द पर्सन हैज सेट, आज उस लेगेसी को हम सब यहाँ पर एक्सपीरियंस कर रहे हैं। सो ग्रोथ इज नॉट अबाउट अ सर्टेन गोल, अ वन टाइम गोल, अ लिमिटेड गोल। इट इज अबाउट अ गोल जिसको दुनिया याद रखे, एंड दैट इज हाउ वी we added this, इसको हमने इसका हिस्सा बनाया। So it's not that you being a human resource person stay limited to just one company, one organization for one time, for a certain time, but think of the things that you can do, that you can offer to that organization, जो आप वहां से अगर चले भी जाते हैं तो बाद के लोग उससे इस्तेफादा कर सकते हैं, उसे याद रखें। लेकिन otherwise beyond this, for your life, just think of how you can set a goal जिसमें आप एक लेगेसी दुनिया के लिए छोड़कर जाएं। So अभी हम यहाँ पर कुछ देर के लिए ब्रेक लेते हैं। There is prayer call as well, नमाज हो रही है, and we'll get back soon. So पूरे 5 बजे I'll be here. Thank you. Please take the break.
So we are back. I hope you all are back as well. From here, we resume the session. Thank you. Yeah. Okay. So here comes this question that do you have a plan to grow? अगर है तो बहुत अच्छी बात है. अगर नहीं तो please work on that. And then growth is not natural. I believe सब इस पे agree भी करते हैं और हम इस पे काफी बात कर चुके हैं. अब ये एक कॉमन बात है कि जब हम ग्रो करते हैं किसी भी एरिया में इन लाइफ तो वहाँ पर गैप्स तो आते हैं और बात हो रही है यहाँ पर पर्सनल ग्रोथ की तो इसमें बहुत सारे गैप्स हैं जो हमारी ज़िंदगी में आते हैं हम एक्सपीरियंस करते हैं. कुछ असेस किए हुए कॉमन गैप्स यहाँ पर आपके सामने डिस्प्ले हैं लेकिन इफ़ there is anything other than this तो आप उसको अपने पास नोट कर सकते हैं ताकि आप उस पर काम करें. अभी जब यहाँ पर हम बात करने लगे हैं तो इन गैप्स में से भी जो आपके सामने हैं आप गौर कीजिए कि किस किस तरह से हम अक्सर अटक जाते हैं आगे बढ़ने से आगे बढ़ने में and we get we get to stop in our growth. The first one which is mentioned here is the assumption gap. Assumption gap क्या है? उसमें आकर हम चीज़ों को अक्सर इस तरह से सोचते हैं कि अच्छा खुद ही हो जाने हैं और ये वजह है जिसमें हम कोई काविश कोई कोशिश नहीं करते, कोई रिसोर्सेस शामिल नहीं करते, किसी और को इन्वॉल्व नहीं करते और इस तरह से हम चीज़ों को खुद ब खुद की सोच में लाकर कि खुद ब खुद हो जाएंगे तो हम वहाँ पर ग्रो नहीं कर पाते हैं. ये गैप है. फिर एक और गैप है द नॉलेज गैप जिसमें अक्सर हम समझते हैं कि मुझे तो पता ही नहीं है कि ये कैसे होना है तो मैं कैसे कर सकती हूँ, मैं कैसे कर सकता हूँ. जो नहीं पता उसको पता करने की ज़रूरत है और पॉजिटिव वे में and relevant way में as well. What you want to learn and the area you want to grow in उसके हवाले से बहुत अच्छा है कि आप नॉलेज अटेन करें. अब आपको वाकई में जब नॉलेज नहीं है आपके पास जिस फील्ड में जिस एरिया में आप ग्रो करना चाहते हैं तो हाउ कैन यू ग्रो. इसलिए आपके पास उसका नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और अगर आप नॉलेज गेन नहीं करते नॉलेज के लिए कोई एफर्ट नहीं करते हैं और आप बैठे बिठाए ये कहते जाते हैं कि मुझे पता नहीं ये कैसे होगा तो डेफिनेटली फिर वाकई आपको नहीं पता कि वो कैसे होगा. लेकिन we need if somebody is facing this gap in any area of your life where you could build your capacity and you could move and develop your potential so please work on that. And then the timing gap जिसमें आकर अक्सर कई चीज़ें करने से हम इसलिए रुक जाते हैं कि हमें लगता है कि मुझे नहीं लगता कि ये ठीक टाइम है करने का या अभी करना चाहिए, अभी होगा या नहीं होगा तो क्या करेंगे, इसलिए अक्सर चीज़ें रुक जाती हैं. एंड देन नेक्स्ट इज द मिस्टेक गैप. और मिस्टेक गैप क्या है? हम अक्सर इस बात को भूल जाते हैं कि इंसान खता का पुतला है और हम ना चाहते हुए अक्सर मिस्टेक्स कर जाते हैं. फिर कोई भी काम हम शुरू करें तो उसमें तो गलती के चांसेस ज़्यादा होते हैं, होनी होती है. कोई होगा जो शायद ना ही कोई गलती कर पाए बट मोस्टली इट हैपन्स. इस वजह से कई लोग ज़िंदगी में ग्रो इसलिए नहीं कर पाते, वो समझते हैं और वो पहले से ये सोचते हैं कि अगर मैंने ये किया तो मुझसे गलती ना हो जाए और वो पहले ही गलती करने से डर जाते हैं. तो ये उनकी ज़िंदगी में एक खला बन जाता है, एक रुकावट बन जाती है आगे ग्रो करने की. नेक्स्ट इज, और आप यकीनन मुत्तफिक होंगे
मैं फिर दोहरा दूं कि प्लीज़ फिगर आउट आपके लाइफ में इनमें से कोई अगर गैप है तो ट्राई टू वर्क ऑन दैट और आप उसको अपने पास नोट कर सकें. एंड द फिफ्थ गैप इज परफेक्शन गैप. जहाँ हमें गलती करने का बड़ा डर होता है वहाँ हमें ये भी एक डर रहता है और इस वजह से हम चीज़ें करते हैं कि अगर मैं करूँ तो मैं परफेक्ट करूँ, मैं इतना बेहतरीन. इसलिए हम रुकते रहते हैं कि जब तक हम परफेक्ट करने लायक नहीं हो जाते. बट हाउ वुड यू कम टू नो अनलेस अनटिल यू हैव नॉट डन इट वंस. सो जब आप उसको करेंगे तो ही पता चलेगा कि वो परफेक्ट है या नहीं है. आप उसके होने से पहले कैसे कह सकते हैं कि इट्स गोइंग टू बी अ परफेक्ट थिंग. इस वजह से बहुत सारे लोग अपनी जिंदगी में ग्रो नहीं कर पाते हैं. एंड देन देयर इज द इंस्पिरेशन गैप, जिसमें ये बहुत मसला है कि मुझे नहीं लगता कि अभी मुझे ये करना चाहिए है या मैं क्यों करूँ. और अक्सर ये चीज़ सोच के कि इंस्पिरेशन नहीं है कहीं या अंदर से मेरा तो अभी दिल नहीं कर रहा, मुझे करना चाहिए है. ज़रूर है कि आप चीज़ों को करें जिनके साथ आपका दिल इन्वॉल्व है, लेकिन आप अपने दिमाग को बहुत मौका दें, क्योंकि हो सकता है कि आज अगर आपके साथ दिल इन्वॉल्व नहीं है तो कल आने वाले वक्त में आपकी एज जो है वो सूट नहीं कर रही है उस काम को करने के लिए, उस लर्निंग के लिए, एडमिशन लेने के लिए, कुछ कर लेने के लिए. कई बार कई चीज़ों की आउटवर्डली लिमिट्स होती हैं. सो डू नो दैट व्हाट शुड बी डन इन व्हाट टाइम. फिर उसके बाद कंपैरिजन गैप, जिसमें अक्सर हम इसलिए ग्रो नहीं करते कि अगर हम कुछ करना चाहते हैं तो हम दूसरों के हवाले से पहले सोच लेते हैं, जो कि पाकिस्तान में एक कॉमन मसला है. आई लव माई कंट्री, लेकिन ये सोसाइटी का मसला है. ये हमारे मुल्क में हम में जिन्होंने ये मसला बनाया हुआ है और हमसे मुल्क आबाद है, जहाँ पर हम अक्सर कंपेयर बहुत करते हैं और हम कहते हैं कि ओहो ये दूसरे तो मुझसे ज़्यादा अच्छा कर रहे हैं, वो बेहतर कर रहे हैं, तो फिर मैं कैसे करूँगा, या मैं करूँगी तो हो सकता है मैं उतना अच्छा ना कर सकूँ, तो इसलिए तो रहने देते हैं. इसी तरह से है द एक्सपेक्टेशन गैप, और इसमें आकर हम काफ़ी हाई एक्सपेक्टेशन सेट कर लेते हैं. हमारी तवक्कुआत बहुत ज़्यादा होती हैं और अक्सर ये सोच कर ही हम आगे नहीं बढ़ते कि जो है ना, ये मैं इससे ये तवक्को करूँ, पता नहीं मुझे ये तवक्को मेरी पूरी होगी या नहीं होगी. और अगर हम हल्का सा कुछ उसमें एफर्ट पुट कर लिया और हमारी तवक्कुआत के मुताबिक चीज़ें नहीं हो रही हैं, तो वी इंस्टेंटली स्टॉप. इंस्टेड ऑफ investing and pursuing with the plan or the program, we stop right there and then. और हम शुरू में ही अंदाज़ा लगा लेते हैं. जैसे अक्सर एक और हमारा मसला है कि हम लोग पहले तो टाइमली डॉक्टर के पास नहीं जाते, और अगर जब हम जाते हैं तो हम कहते हैं कि नहीं, इसकी दवाई से मुझे आज शाम में आराम नहीं आया तो मैंने अगली सुबह किसी और डॉक्टर को देखना है, मैंने और मेडिसिन नहीं लेनी. तो हम अक्सर इस वजह से वो ट्रीटमेंट ना लेने की वजह से रिकवर नहीं. लाइकवाइज हम लाइफ में अक्सर चीज़ों को आगे देख नहीं पाते हैं, उसमें ग्रो नहीं कर पाते हैं, बिकॉज हमने अभी शुरू किया नहीं और हम फ़ौरन से एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारी एक्सपेक्टेशंस को ये चीज़ मीट करे. और मज़ीद सब्र या इंतज़ार किए बगैर या और एक्सप्लोर किए बगैर हम क्विट कर देते हैं. सो दैट क्विटिंग स्पिरिट इज एक्चुअली a core of this expectation gap, which hinders your growth. Now on display there are those same 8 gaps in front of you. आप से मैं शुरू में रिक्वेस्ट की थी when we started talking about these gaps कि अगर आपको लगता है आपकी लाइफ में इनमें से कोई गैप है तो प्लीज़ आप अपने पास नोट डाउन कर लीजिए और ट्राई टू वर्क ऑन दैट. वी आर नॉट परफेक्ट. हमेशा देयर इज़ एन एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट इन आवर लाइव्स और वी आर ओवरकमर्स. हम जब एफर्ट पुट करते हैं तो डेफिनेटली अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं. इसलिए लेट्स पुट एफर्ट इन द गुड थिंग्स. और अगर इसमें से कोई ऐसा ट्रैप है जिसमें आपको लगता है कि आप ट्रैप्ड हैं, सो दिस इज द मोमेंट, यू गॉट द अपॉर्चुनिटी टू ओवरकम.
आई बिलीव कि आज के सेशन को जो एक सरप्राइज के तौर पे आया आपके लिए, हो सकता है आप इस तरह एक्सपेक्ट ना कर रहे हो, लेकिन ये आपको बहुत सी चीज़ों की इंसाइट दे रहा है। और इफ इट इज हेल्पिंग यू, प्लीज डोंट हिंडर योरसेल्फ एंड डोंट रिस्ट्रिक्ट योरसेल्फ टू बी ऑनेस्ट विद योरसेल्फ एंड टू नो कि हाँ अगर ये है तो फिर टेक इट एंड लेट्स वर्क ऑन इट. Do that, please. Moving on. अब अगर ये गैप्स हैं लाइफ में तो इट्स ओके, होते हैं. वी हैव कम टू नो अब यहाँ से हमारी ट्रांजिशन हो सकती है. सो वो ट्रांजिशन इंटेंशनल ग्रोथ की तरफ कैसे होगी? इन क्वेश्चंस को अपने आप से करने से. There are simple questions that one needs to ask him or herself. और वो सादे सवाल आपके सामने स्क्रीन पर हैं, जिससे आपकी ट्रांजिशन इस रुकावट से या रुकावटों के इस चंगुल से जो है वो ग्रोथ की तरफ हो सकती है. सो ये सादे से सवाल कौन से हैं? द फर्स्ट वन सेज, वेयर डू यू वांट टू गो इन लाइफ? जिंदगी में आपकी मंजिल क्या है? फिर मंजिल पता चल गई है, गोल आपने सेट कर लिए, पर्पस आपने लिख लिया, फाइन. अगला सवाल, व्हाट डायरेक्शन डू यू वांट टू गो? जो यहाँ रहते हैं या अदरवाइज भी सभी ने मरी देखा हुआ है, तो हम सब जानते हैं मंजिल अगर हमने लेट्स से बनाई है कि ये दिस इज द समर टाइम या इस ईद पे मरी जाना है, तो उधर जाने के मुख्तलिफ रास्ते हैं. Which one is my direction I'm going to pick to go there? So इसी तरह लाइफ में there can be many directions, लेकिन बहुत सारी चीजों को देखते हुए which is the right direction to be taken, ये देखना जरूरी है. And then the third question is, what's the farthest you can imagine going? मैंने एग्जाम्पल के तौर पे मरी को लिया. सो अभी हम फिर इसी की बात करते हैं कि आपने टारगेट कर लिया कि आपने मरी जाना है. फिर आप देखते हैं कि आप डायरेक्शन कौन सी लेंगे. डायरेक्शन वहाँ की दो है हमारी साइड से जाते हुए, इनफैक्ट तीसरी बहुत कॉम्प्लिकेटेड है. सो अब उन डायरेक्शंस में से आपके लिए राइट डायरेक्शन कौन सी है? विच डायरेक्शन डू यू टेक टू गो देयर टू योर डेस्टिनेशन? फिर उसके बाद क्या ख्याल है अगर वहां आप पहुंच गए हैं? इस पे हमने पहले भी बात की है, बुर्ज खलीफा जिस तरह जवाब आया था आपका, तो क्या वो अल्टीमेट डेस्टिनेशन है? लाइक बस उससे आगे कुछ नहीं हो सकता. सो आगे देखें कि कितना और आगे बढ़ सकते हैं. अगर जब अपने स्कूल में थे तो आप सोचते थे कि आप जो है वो मास्टर्स करेंगे किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में. आपने मास्टर्स कर लिया तो क्या ख्याल है? Has that become a set goal और उससे आगे कुछ भी नहीं है? वो अल्टीमेट गोल है जो आपने अचीव कर लिया. Nothing more can be done. So what further you can do in your life? जैसे HR प्रोफेशनल होते हुए, was this the only target that you become an HR manager? What more you can do, what beyond you can do, that is still there. So आप अपने आप से ये सवाल कीजिए और जरूर इस पे फोकस कीजिए कि what's the farthest you can imagine going in your life. And the last question here is, how long will it take? How long will it take? ये भी नहीं है कि मंजिल ऐसी सेट कर ली है कि डायरेक्शन भी हमें पता है, ये भी पता है कि उससे आगे भी जा सकते हैं और फिर हम छोड़ दें कि अच्छा जब भी जाएंगे. ऐसा भी नहीं है. टाइम फ्रेम इज रियली इम्पोर्टेंट. सो नो दैट दिस इज माई टारगेट. 5 years के टारगेट ये है, 10 years के टारगेट ये है, और इतने टाइम में. Nobody knows the next hour or moment of life. लेकिन ये जरूर है कि we should have a plan. And that is wisdom. That is design.
That is awareness. That is, consistency. That is curiosity. That is modeling. That is expansion. That is contribution. So ये सारे laws को include कर देता है. So after having asked these 4 questions and you got your answers with you, अगर किसी ने अभी नहीं लिखे, you need to take time. So it's up to you, please. But do take time, I request, because that will help you a lot. बेशक आप बहुत टैलेंटेड लोग हैं और आपने अपनी लाइफ में अचीव किया, but that is not your ultimate limit. That is not your ultimate goal. आप वहां पहुंच नहीं गए. You still can do more beyond this. Now, इन सब चीज़ों को जो आपने अपना प्लान किया, उसके बारे में आपने डायरेक्शन देख ली, आपने जब ये देख लिया कि आप कितना फर्दर लाइफ में जा सकते हैं, और फिर ये कि कितना टाइम फ्रेम है जिसमें आपको ये काम करना है, तो उस सब को करने के लिए, शुरू करने के लिए व्हाट इज़ द राइट टाइम, किस दिन शुरू करेंगे, किस मंथ में शुरू करेंगे, कौन सा टाइम पीरियड है जो सेट करेंगे, ये देखना बड़ा ज़रूरी है. तो उसके लिए आपकी स्क्रीन पर लिखा आ रहा है, डू इट नाउ. Then there is a tagline saying, seriously, what are you waiting for? तो आप अगर ये वेट करते रहे, कहा जाता है ना, कल किसी ने नहीं देखी. Who knows? You get the same opportunity. Who knows? You get the same resources again. Who knows? So when you are thinking to do something to help you grow, do it now. Don't wait for any other hour. This is a great quotation by John C. Maxwell. He says, the only guarantee that tomorrow will be better is if you are growing today. Just because of the shortage of time now, I would like to continue, otherwise हम उस पे discuss कर सकते थे. But later you surely can share about the quotation that I just read from John Maxwell. The only guarantee that tomorrow will be better is if you are growing today. And now, again, we talk about the fear factors. हमने plan तो कर लिया और चारों questions पर हमने गौर कर लिया है. हम ready भी हैं कि हम काम को अभी शुरू करें, लेकिन फिर से कुछ fear आ जाता है, और वो fear factor क्या है वो हम देखते हैं यहाँ पर, और उसमें आता है कि हमें फेलियर का fear है, जिस वजह से हम अभी शुरू नहीं करना चाहते, कि शुरू करेंगे कुछ भी नाकाम ना हो जाए. हमें नाकामी का डर रहता है, और अक्सर ये डर हमें आगे बढ़ने नहीं देता. फिर इसी तरह fear of trading security for the unknown. यहाँ पर भी हम अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हो जाते हैं, और हमें ये होता है कि क्यों हम रिस्क लें, क्यों हम ये कर जाएं, अगर ये ना हुआ तो ये हो जाएगा, फिर हम कैसे इसको कर लें. सो वो भी रुकावट रहती है. फिर fear of being overextended on resources, कि ओहो ये तो मेरी बस हाथ से बाहर है चीज़, तो इसीलिए नहीं मैं कर सकते हैं, अभी स्टडी शुरू की, ये हो जाएगा वो हो जाएगा. It's good to manage your finances, it's good to manage your time, लेकिन हमेशा ये देखें कि आपके resources उन चीज़ों से पैक्ड रहने चाहिए हैं जो healthy हैं, जो nourishing हैं, जो effective हैं. लेकिन unnecessarily अगर हमने कुछ किया है, जैसे कोरोना के डेज में we found out बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे resources पे over extended थी, और वो बहुत कुछ है जो कट गया, and people got to know the real life thing, हम कितनी आर्टिफिशियलिटी में आ गए हैं. सो इसलिए बहुत सारी चीज़ें जो हमें ग्रो नहीं करने देती, अगर हम उन्हें रियलिस्टिक होकर देखें तो वो चीज़ें हमारी ज़िंदगी में माने भी नहीं रख रही होती, उनकी ज़रूरत भी नहीं होती है. सो इफ़ देयर इज़ समथिंग लाइक दिस इन योर लाइफ एंड इट इज़ कीपिंग यू बिहाइंड, get rid of it and grow forward. Next is
fear of what others think, दूसरे क्या सोचेंगे। अभी मैं बात कर रही थी कि पाकिस्तान में सोसाइटी के अंदर बहुत ज़्यादा ये मसला है, हम अपनी सोच से कम और दूसरे की सोच से बहुत ज़्यादा सोचते हैं। ज़रूरत भी है कि हम ये देखभाल कर चले हमारे इर्द गिर्द के लोगों को। ऐसा भी नहीं है कि हम we walk too bold and outrageously कि हम ना देखें, इर्द गिर्द की बिल्कुल परवाह ना करें। लेकिन इसका मतलब यहाँ पर ये है कि हम कई बार इतनी परवाह करते हैं कि अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने के हवाले से हम ज़्यादातर ये सोचना शुरू कर देते हैं दूसरे क्या कहेंगे। I'm grateful for most of the women present here in this session today, and I believe that you go on the run, आप साथ साथ होंगी, and it's a good thing। बहुत सारी चीज़ें खातीन होने के नाते ही नहीं हम कर पाते कि हम फीमेल हैं और इसलिए दूसरे क्या कहेंगे, ये कर लिया दूसरे क्या कहेंगे, दूसरे क्या कहेंगे, और दूसरों के चक्कर में बहुत सारी हमारी ग्रोथ हम रोक के रखते हैं। इसी तरह से फियर ऑफ पुशिंग अदर्स अवे, अगर मैं आगे निकला, मैं आगे निकली, मैंने ये कोर्स कर लिया, मैंने मज़ीद ये ट्रेनिंग कर ली, मैंने मज़ीद ये पढ़ लिया, दूसरा ये समझेगा कि वो हो शायद मैं उन्हें दिखाने के लिए, मैं उनको पीछे करने के लिए कर रहा हूँ। सोसाइटी में मैंने कोई काम कर लिया, मैंने ये ऑर्गेनाइजेशन शुरू कर दी, दूसरा ये समझेगा मैंने उसको प्रेस करने के लिए, उसको पीछे रखने के लिए किया है। इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं जिनकी वजह से हम आगे बढ़ नहीं पाते हैं। लेकिन ये याद रखिएगा कि फियर एक इमोशन है और इसके ऑपोजिट फेथ भी हमारा इमोशन है। इसलिए आपके अंदर कौन सी डिज़ायर स्ट्रॉन्ग है, वो चेंज की डिज़ायर है या ग्रो की डिज़ायर है। अगर आप अपनी ज़िंदगी में फेथ की डिज़ायर है या फियर की डिज़ायर है, अगर आप अपनी ज़िंदगी में फियर को ज़्यादा फीड करेंगे तो डेफिनेटली फेथ कमज़ोर हो जाएगा, और अगर आप अपने फेथ को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करेंगे तो फियर डेड हो जाएगा। इसलिए लेट फियर डाई एंड लेट फीड योर faith so that you can grow stronger and you can see and experience a change in your life. Now we are at the end of the session today, जिसमें आकर on-site class में तो हम we hand over a printout for this particular slide, which is before you, आपके सामने है। So अभी आप देख सकते हैं कि इसमें 2 कॉलम्स हैं और इन दोनों कॉलम्स की अपनी अपनी हेडिंग है, और जो इनकी हेडिंग है, जो इनका टाइटल है, वो ऑन माई लेफ्ट इट इज़ एक्सीडेंटल ग्रोथ, और फिर उसके बाद नीचे एक स्केल है नंबर्स का 0 से लेकर 10 तक, और फिर उसके बाद आगे इस हेडिंग के अंदर डिफरेंट स्टेटमेंट्स हैं। इसी तरह से इंटेंशनल ग्रोथ ये दूसरा कॉलम और उसके नीचे डिफरेंट पॉइंट्स हैं। अब ये 2 ऑपोजिट चीज़ें हैं जो और भी ज़्यादा इस कंपैरिजन को क्लियर कर देती हैं। आर यू अ पर्सन हु बिलीव्स इन एक्सीडेंटल ग्रोथ, जो खुद ब खुद बढ़ने के इंतज़ार में, या जब कोई आ गई अपॉर्चुनिटी तो देख लिया लेकिन अपॉर्चुनिटी क्रिएट करने वाले नहीं या सीख करने वालों में से नहीं है। सो ये डिफरेंस है, और इसमें आकर ये स्केल का जो मकसद है वो है आपकी सेल्फ एनालिसिस करना, आप खुद को इवेलुएट करते हैं यहाँ पर। सो हाउ कैन यू डू दैट, आप इसको किस तरह से कर सकते हैं, लेट्स जस्ट चेक इट। हम यहाँ देखते हैं, sorry, आप अदरवाइज इसका प्रिंट ले सकते हैं जब आपके साथ ये शेयर किए जाए, लेकिन अगर नहीं भी तो आप इसको like you can just open and mark your own evaluation। ये आपको हेल्प करेगा चीज़ों को जान लेने में, और फिर 1 month after you can recheck and re-evaluate yourself। अगर आपने आज मार्क किया है
और आप उन खामियों पे, उन खराबियों पे काम करना शुरू हुए हैं, या जो चीज़ें आप में अच्छी हैं उन पे और काम करना शुरू में और वो और बेहतर हो जाएंगी, तो यू कैन इवेलुएट योर सेल्फ आफ्टर 1 मंथ, और 1 मंथ के बाद आप उसको और बेटर पा सकते हैं. सो लेट्स सी. फर्स्ट है एक्सीडेंटल ग्रोथ और उसके ऑपोजिट है इंटेंशनल ग्रोथ, और मैं इनको साइड बाय साइड पढ़ती चली जाऊंगी. सो एक्सीडेंटल ग्रोथ वाला शख्स जो है, ही प्लान्स टू स्टार्ट टुमारो, आने वाले वक्त पे चीजें छोड़ता है, जबकि इंटेंशनल ग्रोथ वाली शख्सियत जो है, दे इंसिस्ट ऑन स्टार्टिंग नाउ. एक्सीडेंटल ग्रोथ पर्सन वांट्स फॉर ग्रोथ टू कम, कहीं से आ जाए खुद, जबकि इंटेंशनल ग्रोथ पर्सन टेक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू ग्रो. वो ग्रो कर रहे हैं, उससे एक काम हुआ है एंड देन ही लुक्स टू डू द नेक्स्ट थिंग. अब आपने मार्क किस तरह से करना है 0 से लेकर 10 तक में. आपको लगता है कि हाँ मैं दोनों में हूँ, तो डेफिनेटली मिडल नंबर 5 आ जाएगा. और अगर आपको लगता है कि नहीं, आई डू बेटर, मैं जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेता हूँ लेकिन इतनी बहुत नहीं, तो फिर आप 5 से ऊपर लेकिन 10 तक में अपने आप को कोई भी नंबर दे सकते हैं. और फिर इसी तरह से अगर आपको लगता है कि नहीं, इस मामले में मैं बिल्कुल वीक हूँ या काफ़ी वीक हूँ, तो फिर आप अपने आप को बिलो 5 मार्क्स देंगे, और इस तरह से ये आपकी सेल्फ इवैल्यूएशन हो जाएगी. सो I start reading again. Accidental growth में थर्ड पॉइंट है, लर्न्स ओनली फ्रॉम मिस्टेक. ऐसे शख्स या ऐसे लोग सिर्फ गलती करके सीखते हैं. इंटेंशनल ग्रोथ पीपल, दे लर्न बिफोर मिस्टेक. हाउ कम दे लर्न बिफोर मिस्टेक? ये क्योंकि एक ऐसा एनवायरनमेंट जिसमें आकर हमने देखा लॉ ऑफ एनवायरनमेंट को क्विकली, कि ऐसे लोगों के साथ अपने आप को लिंक्ड रखते हैं जिनके तजर्बे से सीख सकते हैं, जिनके साथ डिस्कशन करके, इनकी लाइफ में मेंटोर्स हैं, वो दूसरों के साथ मशवरा करते हैं, इसलिए वो गलती से बच जाते हैं. और दे हैव द हैबिट ऑफ रीडिंग, और या रिसर्च करना उनकी हैबिट में है. इस वजह से इंटेंशनली जो ग्रो करना चाहते हैं वो चीज़ों की खोज में रहते हैं, इसलिए दे लर्न बिफोर मिस्टेक्स, और गलती से बच जाते हैं. एक्सीडेंटल ग्रोथ वाले लोग जब तक गलती नहीं, सीखना नहीं. एक्सीडेंटल ग्रोथ वाले लोग डिपेंड ऑन गुड लक अ लॉट. उन्हें ये लगता है आज का दिन अच्छा चढ़ा है, सूरज इस तरफ से नजर आया, उन्हें फलां का चेहरा देख लिया इसलिए दिन अच्छा नहीं गुजरा, आज का ये नंबर नजर आ गया, ये डेट नहीं उनके लिए सही है. जबकि कहा जाता है कि तकदीरें या नसीब तो उनके भी होते हैं जिनके हाथों की लकीरें नहीं होती, जिनके हाथ नहीं होते, तो जिनके हाथ नहीं होते, सो इवन किस्मत या तकदीर तो उनकी भी होती है. सो इसलिए, लेकिन बहुत सारे लोग जो हैं वो गुड लक पे डिपेंड कर रहे होते हैं, और वो कौन से हैं? वो हैं जो एक्सीडेंटल ग्रोथ के शिकार होते हैं. लेकिन इंटेंशनल ग्रोथ वाले लोग, दे रिलाई ऑन हार्ड वर्क, और यकीनन वो अपनी मेहनत का अजर या फल पाते हैं. इसी तरह से एक्सीडेंटल ग्रोथ पीपल, दे क्विट अर्ली एंड ऑफन. काम शुरू करेंगे, फिर वहां से उनका दिल भर जाएगा, फिर वो वहीं पे छोड़ देंगे. वो मेहनत नहीं कर रहे होते या परसू नहीं कर रहे होते, चीज़ों को ट्रेड ऑफ नहीं करना चाह रहे होते हैं, इस वजह से फिर जल्दी क्विट भी कर देते हैं. और ये फिर अक्सर ही करते हैं वो ऐसा, फिर वो आदतन ऐसा करने वाले बन जाते हैं. जबकि इंटेंशनल ग्रोथ पीपल जो है, दे फाइट फॉर दे परसवेयर लॉन्ग एंड हार्ड. तो वो क्या करते हैं? दे परसवेयर लॉन्ग एंड हार्ड, यानी वो जैसे भी है, कठिन हालात है, मुश्किल है, जैसे हो सकता है कि आज फर्स्ट क्लास थी, आज तो आपने सारों को बताया और बहुत अच्छे से आपके लिए जो है वो फर्स्ट सेशन में आना आसानी नस्बतन आसान हुआ है. रमज़ान भी है, नस्बतन आसान है, लेकिन अगले दिनों की बात है कि अगले दिनों में आप किस तरह से इस क्लास के अंदर आ पाएंगे. आपके ऑफिस आवर्स चेंज हो जाएंगे ईद के बाद, और उसमें फिर आप जब यहाँ पर आते तो तब पता चलेगा कि आर यू इंटेंशनल अबाउट योर लर्निंग. और फिर ये कि ये तो 10 वीक्स का है ना एक कोर्स, बट हाउ अबाउट द थिंग्स दैट यू हैव टू डू मे बी फॉर ईयर और मे बी फॉर 2 years, और इस तरह से कोई लर्निंग गेन करनी है, कोई और टेक्निकल कोर्स है, कोई और प्रैक्टिकल लर्निंग है. एंड हाउ अबाउट ग्रोइंग इन योर रिलेशनशिप्स, जो एक लाइफ लॉन्ग बात है, उसमें आकर आप टाइम की लिमिट नहीं सेट करते हैं. सो आप उनमें कैसे कैसे ग्रो करते चले जाएंगे. सो दैट इज हाउ यू हैव टू बी इंटेंशनल अबाउट योर ग्रोथ, एंड यू हैव टू परसवेयर लॉन्ग.
and hard. So आप अपने आप को देख सकते हैं, और ये टाइम ऊपर मार्क्स हैं, आप खुद को मार्किंग अपने लिए कर सकते हैं. Then accidental growth people, they fall into bad habits, whereby intentional growth people, they fight for good habit. अब एक्सीडेंटल ग्रोथ वालों की जब हम बात करते हैं, हमारे उर्दू तर्जुमे में ये बात आ जाती है कि बुरी आदतें पड़ जाती हैं. कभी नहीं हमने सुना कि अच्छी आदतें पड़ें. अच्छी आदतें किसी को नहीं पड़ती, अच्छी आदतें जो है वो अपनानी पड़ती हैं, वो डालनी पड़ती. बुरी आदतें वो पड़ जाती हैं, मतलब easily it happens. लेकिन अच्छी आदतों के लिए to rise up early in the morning, to you know, spare time no matter what, to read something before you go to sleep, and to eat healthy, and you know, to sit in a council of great people, ये सब चीजें. और फिर you know, like to do the things before the deadlines, बहुत सारा कुछ. सो वो अच्छी आदतों के लिए आपको फाइट करना पड़ता है, स्ट्रगल करना पड़ता है. लेकिन बुरी आदतें इजी गोइंग चीज़ है, इसलिए एक्सीडेंटल ग्रोथ वाले लोग अक्सर इस चीज़ का शिकार होते हैं. इंटेंशनल ग्रोथ वाले लोग डिसिप्लिन्ड होते हैं और वो अच्छी आदतें अपनाते हैं. एंड आई बिलीव दैट यू पीपल आर द बेस्ट वर्जन of yourself. And then accidental growth people are the people who talk big, boasting में रहना. लेकिन intentional growth people, they follow through, which means what they say, they do it. और फिर इसी तरह accidental growth people, they play it safe, which means they don't take risk. Opposite है intentional growth people, they do take risk. एक्सीडेंटल ग्रोथ पीपल, दे थिंक लाइक अ विक्टिम. हर वक्त वो जैसे बहुत ज़्यादा में हम इस वक्त में सारी चीज़ों को गवर्नमेंट पे ले आए हैं. आई एम नॉट गोइंग टू गो ऑन द पॉलिटिकल साइड, बट वट एवर इट इज़, गवर्नमेंट किस पर है? हम लोगों पर है. सो हु इज़ कीपिंग दिस गवर्नमेंट? हम मेजॉरिटी हैं, हम यू नो, वी आर द पॉपुलेशन, वी आर द पब्लिक. And you know, for us that government is there, it is ruling. हम complain करते रहते हैं, हम victim बने रहते हैं, लेकिन हम उन चीज़ों के against क्या कर रहे हैं? Intentional growth people, they think like a learner. उनके साथ कुछ भी हो हालात में जैसे भी, and they know how to learn from the things and they move on. लेकिन वो victim thinking का शिकार नहीं रहते हैं. And accidental growth people, they rely on talent, whereby intentional growth people, they rely on character. यहाँ भी difference है. बहुत मर्तबा लोग अपने टैलेंट पर कि वो ये कर लेते हैं क्योंकि वो टैलेंटेड हैं, लेकिन टैलेंट में अगर लर्न नहीं किया गया है, आप ट्रेन नहीं हुए हैं, तो आपका कैरेक्टर सेट नहीं होता. इसकी एग्जांपल के लिए मैं यूँ कहूँगी कि जैसे आजकल टिकटॉक पे बहुत सारे लोग हैं, एंड यू नो दे स्टार्ट सिंगिंग, उनकी आवाज़ खूबसूरत है और अच्छा है, लेकिन क्या ख्याल है जब उन्होंने कहीं बाकायदा सीखा नहीं है, तो डू यू थिंक दैट दे आर गोइंग टू अर्न डिग्निटी, अर्न नेम? तो ये वीडियोस वायरल हैं, आज हैं, कल ख़त्म हो जाएंगी, लेकिन लेगेसी क्रिएट नहीं होती. बट वो जिन्होंने बाकायदा सीखा, आज हम बहुत सारे उन लोगों के नाम जानते हैं. लाइकवाइज बहुत सारे लोग हैं, अगर एकदम से कहीं शायरी पॉपअप हुई है तो दैट इज़ अ टैलेंट, बट इफ़ दैट पर्सन हैज़ नॉट लर्न from it, you know, and not learn, he's not a learned person into it, और उसके अंदर उसने और प्रैक्टिस नहीं किया और कुछ नहीं, तो definitely he is not going to be a known poet. So likewise, टैलेंट के साथ बहुत सारी चीज़ें की जाती हैं, लेकिन जब उस टैलेंट पे काम किया जाता है और उस टैलेंट में ट्रेन हुआ जाता है, तो फिर आपका कैरेक्टर बिल्ड होता है, और कैरेक्टर इज एक्चुअली समथिंग विच लीव्स द लेगेसी. इसलिए आपकी इंटेंशनल ग्रोथ जो है वो आपको लेगेसी जो है वो आपकी लेगेसी बनाती है, लेगेसी गिवर बनाती है. एंड देन एक्सीडेंटल ग्रोथ पीपल, दे स्टॉप लर्निंग आफ्टर ग्रेजुएशन. जैसे हो सकता है कि ये कोर्स है और यू नो वी आर डन एंड वी हैव यू नो earned the certificate,
बात खत्म। लेकिन जो इन 10 हफ्तों में बताया जाता है, सिखाया जाता है, आगे उसको प्रैक्टिकल नहीं करते, नहीं लाते, तो that makes you an accidental growth person. So it should not be for the sake of just receiving and achieving one certificate, but for the sake of learning. And we get to know intentional growth people, they never stop learning. उनके लिए learning कभी stop नहीं होती है. And I believe this room is full of the people who are growing intentionally, as already joining this course shows that you have taken time, you have invested your resources, you have invested your time as well, your effort. So really appreciate you, and thank you for paying attention and being the part of this session today. We are done for today. If there is any question, you may drop in the WhatsApp group, and we are always there to answer it. Anything for now, if quickly somebody wants to say something? ओके जी, थैंक यू वेरी मच आप लोगों ने हमारे साथ ज्वाइन किया आज का सेशन. टुडेज सेशन वाज वेरी मच इम्पोर्टेंट, क्योंकि जो कुछ भी हम आगे लर्न करने जा रहे हैं, सीखने जा रहे हैं, उसकी फाउंडेशन आज के सेशन से स्टार्ट होनी थी. और कल का सेशन भी बड़ा इम्पोर्टेंट सेशन होगा. डेट विल बी हाउ सक्सेसफुल पीपल थिंक, कि डिफरेंट थिंकिंग हेड्स जो हैं वो हम सोचें, उसके बारे में सोचेंगे. डिफरेंट थिंकिंग पैटर्न्स हैं, उनके बारे में बात करेंगे. तो ज़रूरी है कि हम अभी जो आज और कल का जो सेशन है वो बिल्कुल फाउंडेशनल सेशन होगा, तो उसको बहुत अटेंटिवली अटेंड करें. तो उसके बाद फिर हम हमारा प्रॉपर CHRP जो स्टार्ट होगा पूरा का पूरा, तो हमें बाकी चीज़ों को अंडरस्टैंड करने में बहुत ईजी हो जाएगा. ठीक है, शुक्रिया आप लोगों का, आप लोग हमारे साथ शामिल हुए. इस यहाँ पे मैं अपने आज के सेशन को एंड करता हूँ. मैं शुक्रिया अदा करता हूँ तबीता जलाल का, कि उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से आपको फैसिलिटेट किया आज के सेशन में, और सेशन को बहुत ज़्यादा इंटरेक्टिव रखा. थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया. टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे अहेड. अफ्तारी करें, रोज़ा खोलें, और हमारे लिए भी दुआ करें, और अपने लिए भी दुआ करें. बहुत शुक्रिया.